गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नए दिन की नई शुरुआत हम कर चुके हैं और अभी अभी बस मैंने चाय बनाई है अपनी और चाय के साथ मैं आज खा रहा हूँ कैडबरी के बिस्किट्स, चॉकलेट वाले। तो मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग बैगवती। तो फटाफट से रेडी होते हैं, नहाते धोते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। और रास्ते में हमें लगा एक जूस पी लेना चाहिए, तो आज हम वेज जूस पियेंगे। क्यों जी? आज सेहत पे पूरा ध्यान है। देख रहे इतना बढ़िया गाजर और पता नहीं करेला और अदरक, पता नहीं क्या क्या डलेगा। बढ़िया गटक गया। ये रहा हमारा जूस। ये आदमी तो गटक गया भाई। आ चुके थे ऑफिस, काफ़ी देर हो गई, ऑलमोस्ट अब 12:30 हो रहे हैं और एज यूजुअल यहाँ पे काम चल रहा है। अजय जी यहाँ नहीं है, अजय जी वहाँ बैठे हुए हैं, फ़ोन कॉल चल रही है उनकी एक। तो हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो अभी काम कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई ऑफिस में बैठे थे, सडनली पता नहीं क्या हुआ, हम भाग रहे हैं नीचे, उतर के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्या हो गया दीदी, कहाँ ले जा रहे हो? बुकिंग आ रही है दोस्तों, बुकिंग आ रही है। बुकिंग लेने के लिए जाना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, अभी पता लगेगा थोड़ी देर में पहुँच के। बुकिंग उठाएंगे, बुकिंग उठा ली, मज़ा आ गया। भाग के गए, पेमेंट उठाई और अब नीचे है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। भाई ने आज नए जूते खरीदे, ये देख रहे हो, जो पहन के आए थे वो पॉलिश करने के लिए दे दिए। और ये नए जूते कोलंबस के, क्या बात है। आज तो मतलब भाई अलग ही चमक रहे हैं। आज मतलब काले जूते पहन के हीरो बनेगा लौंडा हमारा। काली जैकेट, काले जूते, टशन खत्म नहीं हो रहा। देख रहे हो जूते पहन के जो बैठा है ये बंदा, कह रहा हूँ जो टशन खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। भाई पहन के बैठूंगा, ऐसे बैठते कैसे बैठते हैं? हाँ भाई, दुनिया को दिखा लो तुम। देख रहे भाई साहब, टशन ऐसा है कि डब्बा लगा के बैठो, बस खर्चा बहुत। तो भाई डब्बा लेके बैठे हुए, कह रहा आज हमने कोलंबस पहना है भाई साहब। तो बताओ ये जूते पॉलिश में जैम क्यों लगा रहा है ना? देख रहे हो जैम लग रही है। वो चाचा ये जैम नहीं, गलती से खा मत ली, उल्टी हमारे पास गिरेगा। मुझे लगा जैम लगा रहा भाई। ब्रेड ले आओ, ब्रेड जैम खाएंगे। आओ, तो बगल में झाल मुड़ी दिख रही है, देखो। रुक जा तू यहीं। इधर मोमोज, रोटी, सब्जी सब कुछ है भाई। क्या चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं चाह रहा भाई, नहीं मैं आज कुछ खाना ही नहीं है आज। डाइटिंग बना आपसे। अब डाइटिंग पे हम कीटो डाइट करेंगे, बट ये देख के मज़ा सा आ रहा है। दिन थामा चलो चाय तो पी सकते हैं यार। चाय पी सकते, ठीक है। तो आज ये झुक के चाय पी रहा है ताकि जूतों पे बूंद ना गिर जाए गलती से भी। क्या हो गया अजय जी? नहीं है ना, राज करने दे। सही बात है। ओ सॉरी यार, मैंने थैले पे वो रख दिया ग्लास यार, सॉरी कर दिया। अरे यार सॉरी भाई, सॉरी। बंदा कर दिया भाई साहब, पैर जमीन पे टिक ही नहीं रहे, देख रहे हो ऐसे बंदा टोज पे खड़ा हुआ आगे करके। अरे भाई साहब क्या हो गया भाई तुम्हें ऐसा? कह रहा है एक दिन तो चलने दे। हो गया तेरा। 2000 years later. तो क्या करें अजय जी, शाम हो चलिए, पैकअप करें? भाई बिल्कुल करते हैं अभी। तो दोस्तों हम करते हैं पैकअप, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं शाम के। तो हम निकलते हैं घर, और जब तक हम घर के रास्ते में घर पहुंचते हैं तब तक आप अपनी इजिप्ट की जर्नी, जो हमारी इजिप्ट की जर्नी थी, वो कंटिन्यू करिए, ठीक है? तो कल हम लक्सर पहुंच चुके थे, क्रूज़ पे हमने बोर्ड कर लिया था और क्रूज़ का रूम आपने देख लिया था। अब आगे की कहानी। सो भाई लोग सेटल हो गए हम लोग और अब रेडी हो रहे हैं अपनी विज़िट के लिए। अब हम जाएंगे कारनाक टेम्पल, जो कि लक्सर में है। Real Egypt. I say here is the real Egypt because everyone came to conquer Egypt, conquered the north. Upper Egypt or the south was kept as pure Egyptian. That's why here is the real Egypt. And they call it upper Yes. because it's higher elevation. Right? As well the Nile. North, yeah. The Nile runs from south to north. Here the nature of the land here is higher. That's why the Nile runs from south to north. One of the rare Niles in the world that runs from south to north. Welcome to Luxor. This is the ancient Egyptian capital. Like 4,000 years ago, this place was the capital of Egypt.
4,000 years ago. But the name of this city was Waset. Waset means power and authority. 332 BC, Alexander the Great came to Egypt and he changed the name and the capital as well. And the name became Thebes. Then the Arabs came here, 641 AD. Then they found everywhere here we have temples. They thought all the temples that we have are palaces. Palace means qasr. Luxor or Al-Aqsar means the palaces. This is the meaning of the name. Egypt as well was not Egypt. Egypt before was Kemet. Kemet means the black land or the fertile soil. And the name became Egyptos. How about the name nowadays? In Egypt, we call Egypt Misr. Misr comes from the grandson of Noah, Mizraim. That's why we call it Misr. As you know, Noah had 3 sons, Shem, Ham, Japheth. Ham had 2 sons, Cushith and Mizraim. Cushith is the father of the Nubian people in Sudan, and we still have some Nubian people in the south of Egypt, in Aswan, the cities that we go to see on Thursday. Cushith is their grandfather. Mizraim is our grandfather. That's why we call the Nubian people our cousins. So as you see, this is Luxor here. So quiet, so beautiful city. And now we are going to see the most important temple in Egypt, Karnak. But we should say here, Karnak temples, not Karnak temple. Because we have like a complex over there. Before we go inside, we will sit down in the visitor center, which is shade, cooler, give you an introduction about the history, then we get in to enjoy the temples and the constructions that dates back to 1570 BC. And together we are going to divide the history to let you know which part in the history you are visiting, just to make the Egyptology science so easy, because you are going to travel back after an exam. Of course. And we have to stay until we get it all right and can't go home. Right. All right. Yes, but you will pay for that. Good money for Indus, huh? Yeah. So, look at the Nile here. You were in the Nile. This one represents like the longest river in the world, 6,670 kilometers, roughly 4,000 miles. And they say that nowadays Mississippi is longer, and we discovered that really Mississippi is longer, just in spelling. When you write the name. Yeah, I would say it's not. Yeah. So, No. just we are so close to now to the temple. So finally we have arrived to Karnak Temple City Center. This is upper, which means south. The Nile runs like this way, from the south to the north. The distance of Egypt. सो गाइस ये है कारनक टेम्पल के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो ये एक लॉबी बनी हुई है और उसके पीछे आप वहाँ सामने मेरे देख रहे हैं गेट्स हैं। तो ये एक मिनिएचर है पूरे टेम्पल का और अब हम इस पूरे टेम्पल को घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। That's why the first part you see here is the duck, like a port. It's a duck. Yes, runs from south to north and used to run here. I have a picture. To complete. Then they used to have like a ramp of mud just to complete all the construction process. After that, they will carve from up to down.
But you know, my dears, this one still unfinished. Because when you compare the first pylon behind me and the second pylon over there, is completely carved and painted. This one still unfinished. And king, his name is Shashank or Shishak. And this king, to know, he is the one who conquered Israel. When was that? 940 BC. And once the place was and later on, his name is Shishak. Or we call him in Egypt Shashank. Same one. He started to construct here, but he didn't finish. Then the pylon was completed by the last native Egyptian king. His name is Naktanibbu. When was that? 360 BC. After that, Alexander the Great came to Egypt. Then we started another. This is the open court of the area. And here we have in the middle 10 columns, 5 each side. The 10 columns here were built by Tahara, and he was a Nubian king. As I mentioned, Egypt was conquered by Libyan, Nubian, and Persian. A Nubian king, his name is Taharaka, built here 10 columns, 5 each side. Represent what? The Pharaoh's plan was up in heaven. And in the middle over there, we are going to see one single rock of what? Of How's your experience so far? I'm feeling too hot and thirsty. You're feeling too hot. It's good for you if you're feeling so hot. I'm feeling too thirsty now. Too thirsty as well. Yes. Okay. But how's the experience overall? Experience was really, in one word, that is ancient Egypt. Okay. Yes. And it's all about ancient Egypt and the history that we got to know, and the pillars and the scriptures, blah 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 blah, and all was really very unexpected experience. All right. And what do you say about our guide, Mr. Remy? He's an excellent. Thank you so He is excellent. He's excellent. Okay. And I did promise that you will enjoy here more than you expect. Yeah. Yeah. And make this trip. I will do my best to make this trip unforgettable one. You are doing your best, I think. Thank you so much. Thank you. And you are most welcome And here. we are. Now let's hear it from Mr. John. Behind me? Yeah. Look at these steps that go down to something. Like a little canal here. Just a little canal for some water because he used to put some plants around. Oh, okay. Because everything you can imagine was green here. Even in the middle of the desert, later on you can see ruins of gardens. Yeah, on the front of the temple of Hatshepsut, the one we go to visit tomorrow. This way to exit. Did you see the movie Cleopatra? I have seen Elizabeth I Taylor, you think- mean? I think that part of it was I filmed going up those steps, you know, at Hatshepsut's palace. Yeah. Cleopatra, you have to know she was not real Egyptian. Oh, I know. Yes. She was Roman. She was a Greek. a Her Greek. father is Ptolemy number 12. And Cleopatra represents the end of the Greek time and the beginning of the Roman time because she got married to the Mark Caesar of Rome. Anthony, yeah. And Cleopatra the famous. That we know, she is Cleopatra number 7. Yeah, We it have was common 6 name. Cleopatras before. The famous one, Elizabeth Taylor, Yeah, is it's number 7. 7. Yes. Well, 7's a good number. Yeah, exactly. John, how's your experience till now? Excellent. Good guide. Very informative. Speaks loud that we can hear him. And puts a lot of emphasis to the stuff. And the group mates. सो गाइस कारनक विजिट हो गया. अब हम लक्सर टेम्पल आ गए और ये सेकंड पार्ट है, मतलब उसी टेम्पल का दूसरी साइड है. सो अब हम लक्सर टेम्पल एक्सप्लोर करके एंड देन वी विल हेड बैक टू अवर रूम. They were this way and this way. What about the ones that are seated? Military. Thank you. Crowning name. Look at the scenes that show us unity here between Upper Egypt and Lower Egypt. Look at this fat man.
big belly, big breasts, curved beard. He is a god. What is his name? His name is Habi. Habi is my god. And Lotus. And Habi joined the two clans together, which show us unity, and he made them in one trunk, something like the human lungs, and the right one bigger than the left. And this is what we have inside the body, which means the ancient Egyptian people got to know about another Egyptian language as well, but with Greek letters. It has the same pronunciation. So this language or this way of writing could Jean-Francois Champollion to read the hieroglyphics. As I mentioned before, the temples were converted into monasteries and the churches, and this language was used by the Christian people in Egypt. Until now, they are using that in the churches. Some certain prayers, they use Coptic way. And look at the mosque. Look at that. The mosque was built on the top of columns here, as you see. And this mosque was built on the top. So this one, what you see, so big fix machines to pump the water out. During the digging, we found a surprise, like well-preserved statues. With all the monuments that we still have in Egypt, but 50% it is सो whatever हमारे गाइड भाई साहब रमी भाई जो भी हमें बता रहे हैं वो सब इन वॉल्स पे इनक्रिप्टेड है. सो बेसिकली ये लक्सर टेम्पल या करनाक टेम्पल जो इससे पहले हम देख रहे थे, वो सब बातें जो इन्होंने हमें बताई वो पूरी एक हिस्ट्री है जहाँ से एरा बिगिन होता है. सो हमने लक्सर से स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि लक्सर इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द ओरिजिन स्टार्टेड, दैट हिस्ट्री बिगिनस. एंड धीरे धीरे अब हम पूरी इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है कैसे हुई वो अब आगे की जर्नी में देखेंगे. अब समय हो चला है वापस बोट पे जाने का. सो ये हमारे क्रूज़ का लॉबी एरिया अपर डेक से, एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर वी एंजॉयड आवर डिनर. एंड post dinner we went up. This is the upper deck from where you can enjoy a beautiful view, and tomorrow we will visit that mountain. So that's the pool where we enjoyed a lot, and this is the bank, I mean Luxor bank. So guys, हम वापस घर आ चुके हैं और मज़ा आया आपको लक्सर देख के. लक्सर में आपने कारनाक टेम्पल देखा और लक्सर टेम्पल देखा, और ये हमारा था डे 2 जब हम लक्सर में अराइव करते हैं और ये सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं. सो दैट्स हाउ आवर टूर बिगिंस, और बहुत मज़ा आया था जर्नी में. और आज की जर्नी बस मैं यहीं तक दिखाऊंगा इजिप्ट की. इसके आगे की जर्नी हम कल कंटिन्यू करेंगे. सो जो लास्ट में मैंने अपर डेक से आपको माउंटेन का व्यू दिखाया, कल हम वहाँ जाएंगे. कैसे जाएंगे वो बड़ा एक्साइटिंग था, बहुत ही मज़ा आया था जाने का तरीका था. सो वो आप कल देखिएगा. और अभी क्या है, अभी हम घर में हैं. सो फटाफट खाना वाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे जो हमारा डेली रूटीन रहता है. और अजय जी के जूते अजय जी जूते कहाँ हैं? ये देखो दोस्तों, ये बंदा आज कह रहा है मेरी लेनी काम देनी. कर. हाँ. वो जूते लाके मेरे सर पे मार दे तू. कुछ ज्यादा नहीं जूते आज. तो भाई तुमने जूते इतने बढ़िया खरीदे, अब हम क्या करें. लो चश्मा लगाओ इसी खुशी में, एक बार हमारे दर्शकों को देखना है तुम चश्मे में कैसे लगते हो. ये लगा भाई साहब, ये लग रहा है भाई, वो क्या कहते हैं, क्या लग रहे हो तुम? क्या लग रहा हूँ? तुम वही लग रहे हो दोस्तों. समझ तो गए होगे तुम. कमेंट सेक्शन में लिख देना ये कैसे लग रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, यही लिखना है. कौन से जूते लिए थे तुमने? तेरा मुंह तोड़ दिया. तो कोलंबस के जूते आ चुके हैं दोस्तों. सो गाइज, अब आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा. तो चैनल को भरपूर प्यार देते रहिए, और जो आप दे रहे हैं प्यार वो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का. आप भी कर दो शुक्रिया. थैंक्स दोस्तों. मुझसे ज़्यादा प्यार तो अजय जी से है. जिस दिन अजय जी नहीं होते उस दिन आ जाता है अजय जी कहाँ हैं. हम तो यही है भाई, हम कहाँ जाएंगे. ये भी ठीक है. सो गाइज, मिलते हैं कल फिर से. एक नई दिन की नई शुरुआत करेंगे और आज का दिन अच्छा भी था. सो मिलते हैं कल
नए दिन की नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।